Good morning, students. Welcome in third lecture of grinding process. Here we are going to discuss about the specification of the grinding wheel. Okay, and for explaining the specification of grinding wheel, I have taken an example here shown in the slide that is 51A60K5V05. Okay, you can remove these two terms 51 and 5. Then A60K5V. These 5 terms is very important, and every grinding wheel can be specify the 5 terms, and we must know about these 5 terms. We must be aware about these 5 terms because specification of grinding wheel, this topic is very important for exam point of view. Okay, and no doubt if you want to purchase a grinding wheel, then you must aware that which type of grinding wheel is required for your use. Okay, so as per application we have to select the proper grinding wheel, and selection will depend that we must aware from the specification of grinding wheel. Okay, so it is ISO designated. सो ISO डेजिग्नेटेड का मतलब ये है कि यूनिवर्सली जो स्पेसिफिकेशन है ग्राइंडिंग व्हील का, दैट इज कॉमन, एक ही तरह से ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई करते हैं. सो जो ग्राइंडिंग व्हील इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चर होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी सप्लाई की जा सकती है. दैट इज ऑल्सो वेरी बिग एडवांटेज. ओके, सो दिस फर्स्ट टर्म 51, that is manufacturer indication number for any kind of product. There is a single firm, single industry which manufacture different kind of product, so they are provided a code for a particular product. Okay, so 51, that is a identification number of manufacturer or code of manufacturer. So there is no any technical meaning of this first term. Okay, technical meaning start from A, symbol A. So A, this first term is defined the type of abrasive, and when we talk about the grit or abrasives, then I have explained there are 4 type of abrasives which are used, that is aluminum oxide, then silicon carbide, then CBN and diamond. Okay, so these are 4 abrasives which are generally used. So these 4 abrasives are defined by the code. Aluminum oxide, that is indicated through A, then CBN, that is indicated through B, silicon carbide, that is indicated through C, and diamond, that is indicated through D. So here this symbol A, that means this grinding wheel is made of the abrasives that is known as aluminum oxide. अगर यहाँ पे B होता है, that means कि this grinding wheel is made of the abrasives that is CBN. यहाँ पे D होता है, that means कि वो grinding wheel diamond abrasive का बना हुआ है. Okay, so this first term is indicated type of abrasive, right? I hope आपको clear हुआ होगा. We go for the next indication, that is 60. So जो next term होता है, that indicate the size of the abrasive. First, type of abrasive, and second, size of abrasive. When we will talk about the size of abrasive, then I have already discussed in previous lecture that size of abrasive is always defined through mesh number. Okay, if mesh number is smaller, then size of abrasive will be larger. If mesh number is larger, that means size of abrasive will be smaller. तो फाइन एब्रेसिव्स जो हैं हायर मेश नंबर से डिफाइन किए जाएंगे, और कोर्स एब्रेसिव लोअर मेश नंबर से डिफाइन किए जाएंगे. तो यहाँ पे हमने एक रेंज शो किया हुआ है, दैट इज 8 to 24 मेश. सो 8 to 24 मेश, दैट मीन्स दिस ग्रिड्स आर कोर्स साइज, यानी बड़े साइज के एब्रेसिव्स हैं. देन 30 to 60, दैट इज मीडियम साइज, यानी 30 to 60 के बीच वैरी करते हैं. सो दैट abrasive is kind of medium abrasive, and 80 to 180, that is fine abrasive. 220 to 600, that is very fine abrasive.
सो हमें किस तरह का वर्क करना है. व्हेन वी विल सेलेक्ट द ग्राइंडिंग व्हील, देन वी विल फर्स्ट choose the grinding wheel according to the workpiece properties. If workpiece is very hard, then we will select the grinding wheel having abrasive is harder. And then हमें अगर rough finishing करनी है, then we will take a grinding wheel of coarse mesh size. अगर हमें very बहुत अच्छी finishing करनी है, then we will take a grinding wheel of very fine mesh size. So selection will depend upon our work preference. Okay. So here 60 number. So 60 number belongs from 30 to 60. That means grinding जो grid size है that is of medium grid size. Okay. Grinding wheel medium grid size से बना हुआ है. एल्युमिनियम ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड मीडियम साइज का एब्रेसिव से बना हुआ है. Okay. Now hardness of the wheel. When we will talk about the hardness of the wheel, so it indicate the bonding strength. जो wheel abrasive से बने हुए हैं वो abrasive कितने अच्छे तरीके से बॉन्ड किए गए हैं, कितने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, उनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वो कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है. Here you can see the grade. Okay, that is known as grade. So it start from A goes to Z. Okay. So इसको 8 पार्ट में डिफाइन कर लीजिए. 3, 3, 6, 7, 8. A to H. A to H that will indicate soft grade. Then I to 3, 3, 6, 7, 8. I to P. I to P that will indicate medium grade. And Q to Z that will indicate हार्ड ग्रेड. ओके, तो ये 3 पार्ट में हमने डिफाइन कर लिया, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड. और हमेशा याद रखिए हमें 8 अल्फाबेट्स स्टार्टिंग के सेलेक्ट करने हैं, फिर नेक्स्ट 8 एंड रेस्ट 1. ओके, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड. तो ये ग्रेड हो जाएगा. तो ग्रेड हमें क्या इंडिकेट करता है? दैट मीन्स जो बॉन्ड्स हैं एब्रेसिव्स के बीच वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है. सो होगा क्या कि जब आप ग्राइंड करते हैं वर्क पीस को तो वहाँ पे व्हील वियर होता है. व्हील वियर का क्या मतलब है? जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो जब वर्क पीस के कांटेक्ट में आएंगे तो उस पर फोर्स एक्ट होता है, एंड उस फोर्स की वजह से वो जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो रिमूव ना हो जाएं ग्राइंडिंग व्हील से, यानी वियर ना हो जाए, वहाँ से फ्रैक्चर होके निकल ना जाए. दैट इज इंडिकेटेड हार्डनेस ऑफ द व्हील. ओके, अगर व्हील सॉफ्ट है तो सॉफ्ट व्हील के थ्रू हम हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं, क्योंकि हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग में जो एजेज होते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स के वो बहुत जल्दी वियर आउट हो जाते हैं. तो ऐसे एब्रेसिव पार्टिकल्स पे फोर्स ज़्यादा लगता है एंड वो ग्राइंडिंग व्हील से बाहर रिमूव हो जाना चाहिए वैसे पार्टिकल्स को, अदरवाइज जो ग्राइंडिंग इफिशिएंसी है वो लो हो जाएगी. तो हम हमेशा जो हार्ड मटेरियल है उसकी ग्राइंडिंग के लिए सॉफ्ट ग्रेड लेते हैं, एंड जो सॉफ्ट मटेरियल है उसकी ग्राइंडिंग के लिए हार्ड ग्रेड लेते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑब्लिक पोरोसिटी ऑफ व्हील. When we will talk about the structure of wheel, then we are talking about the density of the abrasive particles. कि abrasive particles बहुत डेंस जो है ज्वाइंट किए गए हैं या बहुत ज़्यादा पोरस ज्वाइंट किए गए हैं. सो इट विल इंडिकेट द स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर. ये 2 पार्ट में हम डिफाइन करते हैं. आप इसको डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो. जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो डेंस टू ओपन बात कर रहे हैं. डेंस टू ओपन यानी 1 to 16 नंबर टोटल होता है. तो 1 to 8 हम डेंस की बात कर रहे हैं. 1 to 8 यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पोरोसिटी के हिसाब से समझ सकते हो कि जब 3-4 एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम होगा, वायर्स कम होंगे तो डेंस कहलाएंगे, या वायर्स ज़्यादा होंगे तो ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा. इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ग्रेन. अगर फाइन साइज के ग्रेन्स हैं तो जाहिर सी बात है डेंस स्ट्रक्चर होगा, कोर्स ग्रेन्स हैं तो ओपन स्ट्रक्चर होगा. ओके, so it will indicate the structure of the wheel.
And the last one, that is bonding material. So bonding material की अगर हम बात करेंगे, so here you can see that there are 5 symbols. Vitrified bond, that is indicated through V. Silicate bond, that is indicated through S. Then rubber bond, that is indicated through R. Resonioid bond, that is indicated through B. Okay, so metallic bond, that is indicated through M. So different kind of bond is indicated through a symbol, and I have provided you notes, and उस नोट्स में बॉन्ड को मैंने बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट किया हुआ है, बहुत ही डिटेल में डिफाइन किया हुआ है. देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड के लिए आप नोट्स को प्रेफर करें. ओके, तो दीज आर 5 टर्म्स. One, that is abrasive, first that is type of abrasive, then grain size, then grade, structure, bond. So these are the 5 terms through which we will specify the grinding wheel, and selection of grinding wheel for a particular work will depend upon the structure of the wheel. Okay, so selection will always depend upon the specification of the grinding wheel, and you must be aware from these 5 terms. Okay, thank you.